Social emancipation and radical thinking complemented anti-colonial struggles in India. The calls for independence inspired our women to forge ahead. It is my proud privilege on behalf of women of India to present this flag to the nation through you. That this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. It was not a constitutional presentation. We had heroic women like Madangani Hasra, who continued to lead the procession with the Indian national flag even after being shot thrice. Kanagalada Barua sacrificed her life at the age of 18 for shouting the slogan, "British imperialists should go back," and for trying to hoist the flag at the British-dominated Gopur police station during Quit India movement. Bhikaji Kama, yet another freedom fighter, travelled to Germany as an Indian ambassador in 1907 to hoist the Indian national flag. Indian women endured enormous suffering to win freedom for our country and to protest against the exploitation of British and feudal men who took advantage of colonial rule. Godavari Paruleka, also known as Godu Tai for the Adivasi members of the Varli community, taught the Varli women to fight fearlessly. The Kuruchia community led a guerrilla warfare by incorporating their women and caused many difficulties and severe damages to the British company force. Beyond class and creed, Indian women fought for the common cause, freedom of the country, and also for social emancipation of the people of India. India's history will not be complete without the names of Savitribai Phule, Sarojini Naidu, Aruna Asif Ali, Mallu Swarajyam, Begum Hasrat Mahal, Usha Mehta, Shandi Ghosh, Sunidhi Chowdhury, Pridilada Vadedar, Kalpana Datta, Beena Das, along with hundreds of women who shed their blood for our freedom. Coming to Kerala, there were women like Kuttimalu Amma, Akka Macharian, Annie Mascarin, Ammu Swaminathan, Rosma Punnus, K.R. Gauriamma, Sushila Gopalan. Sorry, there was some technical glitch in that video, but I think that short video was enough for all of us to remind us of all those women who had given their lives and family lives for the motherland. Let me now take this opportunity to formally welcome all the dignitaries on the dais to this function. It is indeed my honor and privilege to welcome Srimati Subhashini Aliji, former Member of Parliament, Lok Sabha, and also a member of the Communist Party of India Marxist and President of the All India Democratic Women's Association, who is also a former Member of Parliament from Kanpur to this dais. Born to Colonel Prem and Captain Lakshmi Sehgal, Srimati Subhashini Ali has been an actor, a politician, an advocate of women's rights, and much more. With a huge round of applause, let us welcome Srimati Subhashini Aliji to this dais. No, ma'am, I'll just welcome all. Yes. Give me a minute to welcome all of you. Next, let me welcome Srimati Nandita Das ji, who is an Honorable MLA from Assam. She is a member of the Indian National Congress Party from the state of Assam. She has been elected twice as the member of the Assam Legislative Assembly from the Boku constituency. Welcome, ma'am. Welcome to the National Women's Legislature Conference organized by KLA. May I also take this opportunity to welcome Honorable MLA from Bihar Legislative Assembly, Mrs. Pratima Kumari. She is a lawyer by profession, and as a legislator, her interests like
lie in working for empowering women, the underprivileged and weaker sections of the society, with a focus on improving the healthcare and educational facilities for all. Thank you so much, Madam, for taking your time out and gracing this function. With a round of applause, let us welcome Srimati Pratima Kumari ji to this function. Let me also take this opportunity to formally welcome Srimati Anmol Gagan Manji, who is an Honorable MLA from the state of Punjab. She represents the Kharar Assembly constituency in the Punjab Legislative Assembly. She is a member of the Aam Aadmi Party, and she is also well known for her Punjabi folk and Bhangra songs. It is indeed an honor to have you amongst us today, ma'am. With a round of applause, let us welcome Srimati Anmol Gagan Manji to the function. Let me also take this opportunity to welcome Srimati P. Sati Devi, Chairperson of the Kerala Women's Commission, who will be moderating this session to this function. Srimati Sati Devi, Madam. And let me also take this opportunity to formally invite Srimati C.K. Asha Madam, Honorable MLA of the Kerala Legislative Assembly, for gracing this function. Thank you all. May I now invite Srimati P. Sati Devi, Chairperson of the Kerala Women's Commission and also the moderator of this session, for the introductory remarks. Over to you, ma'am. Honorable speakers on the dais, Comrade Subhashini Ali, daughter of Kerala, our beloved daughter of Captain Lakshmi, Srimati Nandita Das, MLA Assam, Srimati Pratima Kumari, Member of Legislative Assembly Bihar, Srimati Anmol Gagan Man, Member of Legislative Assembly Punjab, Srimati C.K. Asha, Member of Legislative Assembly Kerala, and all other dignitaries assembled here in connection with this seminar arranged by the Kerala Legislative Assembly. I am really happy to address this seminar organized by the Kerala Legislative Assembly as part of the celebrations marking 75 years of independence in connection with the National Women Legislators Conference Kerala 2022. I really appreciate the initiative taken by our Honorable Speaker of Kerala Legislative Assembly to arrange such an important conference and various sessions having a good discussion on the independence of our country and the history behind it. The role played by women in the independence struggle, it is a separate session, and we used to say that history is always his story and not her story. So to have an analysis of the role played by women is highly important in this 75 year of our independence. So we will have to a detailed look into the epoch-making events of the freedom struggle. As shown in the video before this session, at the time of session start, we have seen our beloved leaders, the heroines of who have paved the way for the independence. Without acknowledging the contributions of women, the history of Indian freedom struggle would be incomplete. The sacrifices made by Indian women will take center stage. They fought with unwavering fortitude and bravery in the face of different tortures, exploitations, and sufferings to secure our independence. At the early 18th century itself, women leaders made a significant mark of their heroism
and will setting the foundation of underlining that women were not ready to be pushed to the background of the independence struggle. I am not going to the details of the freedom struggle and the part played by our legendary leaders, since there are so many eminent speakers, including our main keynote address will be given by Srimati Subhashini Ali. So I am not going to the details of this struggle. I am only pointing out that we are in the 75th year of our independence. And in the previous session, we have already discussed about the constitution, or constitution which is giving all powers, all rights that enjoyed by men also. So in this era itself, we will have to initiate, because all that eminent legislators are taking part in this conference, and it will make a message to the country that it is the apt time. Even at this time itself, some role should be recognized by the women legislators, and in order to make the country, the status of women, in order to push them in the streamlight of our country, some steps should be taken, and it should be a message, the entire seminar and the discussions, and I expect all the speakers will be pointing out the relevance of the freedom struggle and the way we will have to obtain the rights and rights that are enshrined in our constitution. And being the moderator, I am not going to the details at this time. I will intervene, and I'll have my speech in the last time. Okay, thank you. Now I am inviting Comrade Subhashini Ali to have the keynote address. She is a former MP of Lok Sabha from Kanpur, and she was the leader of Democratic Women's Association of India, and she is a good artist also. And she moreover, from Kerala, we are very much delighted to have her speech, being the daughter of Kerala. Okay. Thank you very much. My very, very dear sisters on the dais, and all the sisters who have had the patience to remain here in the hall, and also my dear brothers. और यहाँ मैं दो पुरुषों का निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगी, जिनकी वजह से हम लोग सब यहाँ आज हैं। एक तो हैं हमारे एमबी राजेश जी, जो हमारे केरला के स्पीकर हैं और जिन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया है। लेकिन आज हमको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हमारे देश में शायद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो भी शायद हम यहाँ आज मौजूद नहीं होते। सो वी आर indebted to two men for being here today. One is Rajesh ji, who is the Speaker of the Assembly, and the other, of course, is Dr. Baba Saheb Ambedkar. Without them, we would not have been here today. तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी कि महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए, लेकिन हमको उन्हें भी याद करना चाहिए जिनको कोई याद नहीं करता और जिनके काम को कोई बड़ा काम नहीं समझा गया था। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगी कि एक महिला थी, भवानी माझी। So there was this lady Bhavani Maji from Bengal, and her husband from Purulia, he was a freedom fighter. तो उनसे जब किसी ने पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने क्या किया, मैंने खेतों को देखा, मैंने फसल काटी, मैं फसल घर पे लाई, मैंने फसल को कूटा, मैंने रोटियां बनाई, मैंने इनको खिलाया, मैंने आज़ादी के लिए लड़ने वालों को खिलाया, और जो लोग अंग्रेज़ों की जेल से भाग रहे थे उनको जंगलों में जाकर के खिलाया। ये काम मैंने किया, लेकिन इसको किसी ने काम नहीं समझा। So there were women like Bhavani Maji from West Bengal, Purulia, whose husband was a freedom fighter, and when she was asked, what did you do? She said, what did I do?
I looked after the fields, I cut the harvest, I brought the grains into my house, I pounded the grains, and I made rotis, I made food to feed all the freedom fighters who used to come to my house, and I also had to take food to the jungle to feed those people who were escaping from the British. तो इन औरतों को भी आज हमें सलाम करना चाहिए, जिनका नाम किसी को याद नहीं है, लेकिन बिना इनके योगदान के ये आज़ादी का आंदोलन शायद हो ही नहीं सकता था. And we should remember that the British were actually opposed from the very beginning of their rule. जब से वो आए तो लोग लड़े और इनमें औरतें भी लड़ी. We all know the name of Rani Chinnamma from Karnataka. But we should also remember Velu Nachiyar, the queen of Shivagangai, who had a woman commander who belonged to the Dalit community, and her name was Kuili. She also fought against the British with arms. And then you know that in 1857 the mutiny occurred, and two names are always mentioned. दो नाम आते हैं 1857 के, हजरत महल बेगम अवध की और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. But we mustn't forget that thousands of women, हजारों औरतों ने उस लड़ाई का साथ दिया, जो लोग लड़ रहे थे उनका साथ दिया. और एक उदाबाई पासी, she was a Pasi lady belonging to the Dalit community, Udabai. She actually shot British soldiers who were in the residency, उन पर गोली चला के उनको मारा. And then there was Jhalkari Bai, who also belonged to the Dalit community. और झलकारी बाई ने झांसी की रानी के साथ, लक्ष्मी बाई के साथ लड़ाई लड़ी. And when we speak about झांसी की रानी and हजरत महल, not only did they fight, लेकिन कितनी चीज़ों से वो लड़े. लक्ष्मी बाई एक ब्राह्मण विधवा थी, लेकिन ब्राह्मण विधवा के तमाम संस्कारों को तोड़ करके उन्होंने राजमहल के बाहर निकल करके घोड़े पर चढ़ करके लड़ने का काम किया. और उन्होंने कहा कि मेरे अपने धर्म से बड़ा धर्म है देश के लिए लड़ना और देश की आज़ादी के लड़ना. So that is what the example that Lakshmi Bai gave. She was a Brahmin widow who broke all the traditions of Brahmin widowhood. He went out of her palace, got onto a horse and fought for freedom, and said that the religion of freeing my country is much greater than my own personal religion. And Hazrat Mahal, एक मामूली घर की एक मामूली बेटी, वो एक बेगम बन गई. और फिर वो अवध में जो सबसे बड़ा जंग था 1857 का, उसकी नेता बनी. और सिर्फ नेता ही नहीं बनी, बल्कि जो पूरी लड़ाई अवध की थी उसका तालमेल बनाए रखना वो उसके और उसके जो सलाहकार थे उनका काम था. तो आप सोचिए कि उस ज़माने में एक मामूली घर की मुसलमान औरत पर्दा और हर चीज़ को लांघते हुए घर से निकल करके उसने दिखाया कि वो केवल एक शासन नहीं कर सकती है, एक लड़ाई भी लड़ सकती है. एंड ये चीज़, this is to be remembered throughout my talk, that all the women who fought for freedom, we must never forget, they fought for their freedom, they also fought for our freedom. They fought not only for the freedom of the country, but they fought for women's freedom from oppression, from feudal oppression, from patriarchy, from caste oppression. All these battles were actually fought by these women. तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि the British of course suppressed the mutiny very brutally. और उस खामोशी को तोड़ने का काम, the terrible silence that followed the atrocities of the British oppression after 1857, that silence was broken by revolutionaries, especially in Punjab and in Bengal. तो ये जो क्रांतिकारी थे बंगाल के और पंजाब के, इन्होंने उस आतंक की चुप्पी को तोड़ने का काम किया. और बंगाल के अंदर हमको एक के बाद एक महिलाओं की और लड़कियों के नाम देखने को मिलते हैं जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, बम बनाए, गोलियां चलाईं और शहादत को भी स्वागत करते हुए अपनाया. So we have so many names
of young girls and women from West Bengal who became revolutionaries, who took up arms, who made bombs, who killed Englishmen, and were not afraid to sacrifice themselves. We have Preeti Lata Vadedar. She was just, I think, 21 years old. 21 साल की थी प्रीति लता जब चिटगांव आर्मरी रेड पे जो ब्रिटिशर्स का क्लब था उसके ऊपर हमला करने की जिम्मेदारी उसको दी गई. उसने हमला किया लेकिन वो खुद घायल हो गई और चूंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहती थी तो उसने जहर खा करके वहीं पर 21 साल की उम्र में अपनी जान दे दी. So that was Preeti Lata Vadedar, who was in charge of the raid in Chittagong on the British club. And because she was wounded, she committed suicide by taking poison because she didn't want to be captured and tortured. And of course, we also know that Kalpana Dutt, वो भी एक बहुत कम उम्र की थी. उन्होंने भी उस चिटगांव आर्मरी रेड में भाग लेने का उनका तय था, लेकिन उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे ख्याल से 3 साल तक उनको जेल में रखा गया. एंड देयर वाज नानी बाला देवी जो 15 साल की उम्र में विधवा हो गई. शी वाज विडोड एट 15 और वो भी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गई और अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया. द ब्रिटिश अरेस्टेड नानी बाला देवी एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन प्रिजनर इन कैलकाटा जेल ever, first woman prisoner, and she was kept in isolation for many years. And after that, she continued to be in the struggle. And फिर बसंती देवी थी जिन्होंने, और ये एक बड़ी बात है, जिन्होंने दलितों को आज़ादी के आंदोलन में शामिल करने के लिए पूरे देश में मीटिंग्स की और जाति प्रथा छुआछूत के खिलाफ भी अपनी आवाज़ को उठाया. She spoke, Basanti Devi spoke against the caste system and said that that also has to be ended if India is to be free. So many names are there. Beena Das, who killed the governor of Bengal and spent 9 years in jail. Matangani Hazra, आपने फोटो भी उनकी अभी देखी, जो झंडा लेकर के आगे बढ़ी और जिनको गोली मार करके शहीद बना दिया गया. तो ये बंगाल की बड़ी लंबी कहानी है. There are hundreds of women's names from West Bengal who were participants in the revolutionary movement, that is the armed militant movement. And in Punjab, जहाँ पर भगत सिंह का नाम हम सब जानते हैं, but we often forget that there was a great woman revolutionary in Lahore. एक महान क्रांतिकारी महिला थी दुर्गा भाभी, और उन्होंने भगत सिंह की मदद की. उनकी पत्नी बन करके ट्रेन में उनके साथ लाहौर से कानपुर तक गई ताकि अंग्रेज उनको न पकड़े. She helped him to escape from Lahore to Kanpur dressed as his wife so that he would not be arrested by the British. और उसके बाद जब भगत सिंह पकड़े गए तो उन्होंने जो गवर्नर थे लॉर्ड हेली, उनकी हत्या करने की कोशिश की. कई अंग्रेज़ों को मारा और 3 साल तक जेल में रहीं. और आप मतलब इन महिलाओं की जब हम तस्वीरें देखते हैं, when we see pictures of these women, all these revolutionaries including Durga Bhabhi, they look like our own sisters and mothers, just ordinary women but with extraordinary courage. उसके बाद हम जानते हैं कि गांधी जी के आने के बाद जो आज़ादी का आंदोलन था वो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया. After Gandhi ji, the movement for independence became a great mass movement. और हज़ारों औरतों ने उसमें स्वदेशी की दुकानों को बनाना, अंग्रेज़ी शराब और अंग्रेज़ी कपड़ों को जलाना, ये सारा काम किया. Hundreds of thousands of women came forward to boycott the liquor shops, to picket the shops, to burn foreign cloth and foreign goods. Thousands and thousands of women came out of their homes and participated in that movement. और उसके बाद 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन, असहयोग और खिलाफत का आंदोलन चला in 1920, then a woman from a most conservative Muslim family, B. Amma, who was the mother of the Ali brothers, she actually abandoned Parda and campaigned for freedom, non-cooperation and khilafat throughout the country, and she used to address the biggest meetings of the time. That was B. Amma. But there are so many other names. And here I would like to say that this movement was also quite strong in the Northeast. Northeast में भी
ये जो असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो काफ़ी मजबूत था. एंड देयर आर सो मेनी नेम्स जिनको कम लोग जानते हैं, क्योंकि our history books are also written with certain regions in mind, but we should remember them. एक आदिवासी महिला थी सिक्किम की, हेलन लापचा, जो फिर बंगाल में she was quite active. एक great नागा woman leader थी रानी गाइडेन ल्यू, शायद मैंने नाम गलत कहा हो, you can excuse me, but she was a great Naga tribal woman leader who actually rallied people for independence and non-cooperation. There was Putali Maya Devi Poddar, a Gorkha lady in Kurseong. So all of these women, and Kanak Lata Barua of Assam, who was shot dead later on in 42, ये सारी औरतें उत्तर पूर्व में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी. And then many women, of course, joined this movement in 1920s, who became very big leaders later on. And there are so many names: Sarojini Naidu, Annie Besant, women members of the Nehru family, Kasturba Gandhi, Ammu Swaminathan, Muthu Lakshmi Reddy. These are names that you heard in the earlier sessions also. So all of them actually came out of their homes in the 1920s, became very active, led big movements and went to jail and actually suffered a lot. But they remained in the movement till the end and became big leaders. लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जितनी औरतें हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं और भी, इन्होंने आज़ादी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा आज़ादी के आंदोलन में जोड़ने की कोशिश की, और वो मुद्दा था महिलाओं की समानता का मुद्दा, महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा. All these women, though they were fighting for India's freedom, they stressed on the point that this freedom movement must include the demand for gender justice, for women's equality, and social evils like dowry, like polygamy, domestic violence, दहेज प्रथा, बहुर विवाह और ये क्या कहते हैं घरेलू हिंसा, इन सारी चीज़ों को भी राष्ट्रीय आंदोलन को समझना होगा और इस पर अपनी राय रखनी होगी. After that, you know, we had the Quit India movement in 1942 and women faced lathis and bullets. बहुत नाम हैं, बहुत लोगों के नाम नहीं भी हैं, लेकिन एक नाम हमेशा 1942 के मूवमेंट के साथ जुड़ता है और वो है अरुणा आसिफ अली का नाम, who throughout that period was able to run an underground radio and take news of this movement all over the country. And now I would like to say that after the 1940s, in the later half, actually there was a new kind of movement that developed in this country. And why was that? It was क्योंकि महायुद्ध के बाद देश में बहुत भुखमरी हुई, बहुत दाम की बढ़ोतरी हुई, जो खाने पीने का सामान वो बिल्कुल मिल नहीं रहा था, जो आम लोग थे, गरीब लोग थे, उनकी हालत बहुत खराब थी, और ख़ास तौर से जो गाँव में रहने वाले जो बटाईदार थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हुई, और जो शहरों में कारखानों में मजदूर काम कर रहे थे, उनके लिए भी ये असहनीय हो गया. So new sections of people were drawn into the movements in the end of the 1940s, and these were people who belonged to the sharecropper families and landless families in the rural areas and to working class families in the cities where factories had been set up. Also, I would like to tell you that this is the time, it was only now that people in India came to know about the INA. When the trial in the Red Fort started, people came to know about the INA, but even more than that, they came to know that there was a women's regiment in the INA. इसी वक्त उनको पता चला कि आज़ाद हिंद फौज का निर्माण सिंगापुर में हुआ था, इसके बहुत पहले, और उनको ये भी मालूम हुआ अब, मतलब 6 साल के बाद, कि उसकी एक महिलाओं की भी टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी ने किया. लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उनके नेतृत्व से भी ज़्यादा एक ज़रूरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. In this women's regiment called the Rani of Jhansi regiment,
there were 1200 women. ये कौन थी? Who were these women, these 1200 women who joined the Rani of Jhansi regiment? They were all children. ये सब उन घरों के बच्चे थे जो सिंगापुर में, बर्मा में, मलेशिया में चाय बागान में काम करते थे, रबड़ के बागान में काम करते थे, जो छोटे छोटे दुकान चलाते थे, जो छोटी नौकरियां करते थे, मतलब गरीब और मामूली घर की ये बेटियां थीं। और ये केरला के थीं, केरला मूल की थीं, ये तमिलनाडु के मूल की थीं। हम लोग तो समझते हैं कि लड़ने वाले लोग तो हट्टे कट्टे हरियाणा के और पंजाब के होते हैं, लेकिन ये औरतें वैसी नहीं थीं। These women who joined the women's regiment, they did not come from Haryana and Punjab. They came from poor families who belonged to Tamil Nadu and Kerala. और सबसे बड़ी बात क्या है, इन औरतों ने, इन लड़कियों ने कभी भारत को देखा नहीं था, कभी भारत की मिट्टी के पर पैर नहीं रखा था। इनके बाप दादा 100 साल पहले भारत से मतलब सिंगापुर और मलेशिया गए थे, लेकिन उनके अंदर भारत की आज़ादी को लेकर के इतना जज्बा था कि वो अपने घर से भाग के आई, पतियों को छोड़ करके भागी और आज़ाद हिंद फौज की इस महिला रेजिमेंट में सदस्य बनी। लड़ने और मरने के लिए वो तैयार थी, पूरी ट्रेनिंग उनको मिली, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज़ाद भारत ने काफ़ी हद तक उनको बिल्कुल भुला दिया। So these young women who joined the Rani of Jhansi regiment, they had never seen India. They had never been to India. Their great-grandparents had been migrants from India. But in spite of that, the idea of India's freedom was so important to them that they ran away from home. They even ran away from their husbands. They joined the regiment and they were ready to fight and die for Indian independence. They got the full training. They went to the front. But it's very tragic that after independence, independent India actually forgot most of these women who had joined that women's regiment. So I would also like to say कि ये तो एक पूरा माहौल बन रहा था उस समय, लेट 40s में, तो लोगों के अंदर एक लड़ने का बहुत बड़ा जज्बा था। Huge struggles started erupting towards the end of the 40s, and actually they continued till after independence also. And I cannot go into the details of all, क्योंकि मेरे ख्याल से time is also limited. But ये जो struggles थी 40 के दशक के अंत में, ये गरीबों के संघर्ष थे, ये गरीबों के आंदोलन थे, गरीबों की बगावत थी, गांव के गरीब और कुछ शहरों के गरीब। शहरों में बंबई का नाम आता है, के पास, तो वहाँ के जो कपड़ा मिल के मजदूर थे, उन्होंने सड़क पर आकर के बैरिकेडिंग की और कहा हम तुमको जाने नहीं देंगे। उस बैरिकेडिंग में अहिल्या रांगनेकर, विमल रणदीवे जैसी महिलाएं भी थीं और एक कमल धोंडे थीं जिनको गोली लग के वहीं पर मृत्यु हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। सो एट दैट टाइम, इफ यू ऑल रिमेंबर योर हिस्ट्री, the RIN mutiny, that is the Royal Indian Navy mutiny, took place, and when the military, British military and police, was moving towards the dock to suppress this mutiny, the textile workers came out and they barricaded the streets, and that movement was led by women like Ahilya Ranganekar, Vimal Randive, and Kamal Dhonde, who was actually shot dead by the British police at that, during that movement. लेकिन इसके अलावा there were many very big movements in which 2 or 3 things were combined. बहुत बड़े संघर्ष हुए जिनमें 2-3 मुद्दे एक साथ आए। एक तो आज़ादी का मुद्दा, दूसरा जमींदारों के खिलाफ अधिकारों का मुद्दा, जो राजा थे उनके खिलाफ आज़ादी का मुद्दा। ये सारी बातें इकट्ठा हुई और कई इलाकों में हमारे देश के बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए, जिनके बारे में जो उन प्रदेशों के बाहर के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, बहुत कम मालूम है। लेकिन उनकी कहानी इतनी रोचक है
कि थोड़ा सा उसके बारे में जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है. So at the end of the 40s, the new struggles of the poor, that is the poor peasantry, the landless, started, and that was a struggle for different kinds of freedom. One was freedom from British rule, one was freedom from their own rajas, and also freedom from the terrible exploitation of the landlords. और इन सारे मूवमेंट्स में, संघर्षों में औरतें आगे आईं. Women came out, the poorest women, they came out in all these struggles. क्यों? क्योंकि जो जमींदारों का जुल्म था उसको सबसे ज़्यादा उन गरीब औरतों को गाँव में बर्दाश्त करना पड़ता था. It was these poor women who were the victims of the terrible atrocities of the landlords, and so it is not surprising if we look at it in that way that they were in the forefront of these huge struggles. I will only mention some of them. There was the revolt of the tribal community in Tripura, जो त्रिपुरा के आदिवासी हैं, और उनका जो संगठन है, एक नाम है मंगलेश्वरी देव बर्मन का, जो उसकी नेता थी, और उन्होंने जो वहाँ पर बेगार होता था उसके खिलाफ आंदोलन किया, और 3 औरतों को गोलियों से भून दिया गया. आज भी त्रिपुरा के लोग उनको याद करते हैं, उनका नमन करते हैं. So there was this kind of a movement in Tripura of tribals against their king, and in that struggle, which was demanding an end to bonded labor, free bonded labor, 3 women were actually shot dead by the police and became martyrs, and they are still remembered today in every village of Tripura. लेकिन त्रिपुरा के अलावा महाराष्ट्र में भी बहुत एक बड़ा आदिवासियों का आंदोलन बम्बई के आसपास ठाणे के डिस्ट्रिक्ट में चला, जो वहाँ पर वर्ली आदिवासी हैं, जिनसे बेगार करवाया जाता था, जिनकी लूट होती थी और जिनकी महिलाओं का शोषण होता था. उन वर्ली आदिवासियों ने भी गोदावरी परुलेकर के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा. कई महिलाएं उसमें मारी भी गईं, कई जेल गईं, कई ने लाठी खाई, लेकिन वो आंदोलन तो आज़ादी के बाद तक चला, लेकिन अंत में जो उस तरह का उत्पीड़न था वो काफ़ी कम हुआ, और जो महिलाओं का इतना ज़्यादा उत्पीड़न होता था वो भी उस आंदोलन की वजह से कम हुआ. So there was the Warli Adivasi revolt. You saw pictures of it a little earlier in the districts near Bombay. It was led by Godavari Parulekarji, and as I said, it was women who came out because they were fighting not only against the British oppressors but against those who were oppressing them as women. And some of them were killed, many were beaten and sent to jail, and that movement continued for about 4 years. It continued till after independence, but they did succeed in getting rid of the bonded labor system and also stopping some of the worst atrocities against women. Then we have to remember, because we are here in Kerala today, 2 very big movements, one in Kerala, but also one very, very big movement in Telangana. आपको मालूम है कि तेलंगाना उस ज़माने में निज़ाम शाही का इलाका था. The Nizam ruled over Telangana, and it was a place of the worst kind of feudal atrocities and oppression. और वहाँ पर भी ये बंधुआ मजदूर की प्रणाली थी तेलंगाना में. वहाँ के जो ज़मींदार थे वो इतने क्रूर थे कि उसका वर्णन भी करना मुश्किल है. और उस इलाके में लोगों ने आंदोलन शुरू किया. वो आंदोलन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी था, निज़ाम से भी मुक्ति पाने के लिए था, और जो महिलाओं का ये उत्पीड़न था और जो गरीब किसानों का उत्पीड़न था उसके ख़िलाफ़ भी था. और उस आंदोलन की शुरुआत एक बहुत ज़बरदस्त महिला ने की, और उसका नाम था, मैं गलती नहीं करना चाहती हूँ किसी के नाम को लेकर के, वो एक गरीब महिला थी जो एक बहुत ही क्रूर ज़मींदार के खेत पर काम करती थी. और उस महिला ने एलम्मा, एनीबडी फ्रॉम आंध्रा और तेलंगाना हियर?
नो। तो ऐलम्मा जो थी एक गरीब ग्रामीण मजदूर औरत, एक दिन वो खड़ी हो गई और उसने कहा कि मैं अपनी फसल इस जमींदार को नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगी। तो वहाँ से ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जमींदारों के खिलाफ, अपने मतलब फसल को बचाने का आंदोलन। सो ऐलम्मा started this movement with her defiance of the landlord, and it spread to more than 3,000 villages of Telangana. 3,000 गांवों की मुक्ति हो गई, उनको मुक्त कर दिया क्रांतिकारियों ने और अपना वहाँ पर शासन उन्होंने कायम कर दिया। 30 लाख लोग मुक्त हो गए इस आंदोलन में। ज़मींदारों की बड़ी बड़ी ज़मीनें उनसे छीन ली गईं, गरीबों को कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली और कई कई औरतों ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम किया। इनके नाम तो इतने हैं, लिंगम्मा जो जना रेड्डी प्रताप रेड्डी एक बहुत बुरा ज़मींदार था, उसके खिलाफ लड़ी। लच्छम्मा एक धोबन थी, उसको पुलिस ने नंगा करके एक पेड़ से उल्टा लटका दिया और उसको पीटा, लेकिन फिर भी वो बोली नहीं और उसने किसी का नाम नहीं बताया। आखिर में वो पीटते पीटते थक गए और उसको छोड़ना पड़ा। तो बहुत सारी औरतें थीं जो गरीब घर की थीं, जो दलित थीं, जो आदिवासी थीं, जिन्होंने हर तरह का काम इस आंदोलन में किया। मतलब इधर से उधर संदेश पहुंचाना और खुद बंदूक की ट्रेनिंग लेकर के पुलिस और फौज के खिलाफ लड़ना और खुद मर जाना, ये सारा काम तमाम औरतों ने किया। सो इन दिस तेलंगाना मूवमेंट, which was a movement of the poor, the poorest in the villages, those who were landless, and it started with that call from Ailamma saying, I will not give my crop to the landlord. It spread to 3,000 villages which were liberated from Nizam Shahi. There were 30 lakh people living here. They got land. They were able to lead a better life for 2 or 3 years. And other changes also took place, which I will talk about. लेकिन अफसोस की बात यह है कि निज़ाम शाही तो वहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन हमारा देश जब आज़ाद हुआ और ये आज़ादी की कुछ जो कमियां हैं उनको भी हमें सोचना होगा। आज़ादी के बाद हमारी दिल्ली की सरकार की पुलिस ने मिलिट्री वहाँ गई और उन्होंने भी गरीब लोगों के साथ वही सलूक और वही बर्बरता की जो कि पहले निज़ाम के लोगों ने किया था। So, are you telling me to stop? Yes? No? Okay. My mistake. So, ये जो आंदोलन था ये आज़ादी के बाद तक चला और अफसोस की it is sad that this movement actually which was against Nizam Shahi was actually crushed by the police and military of Free India, which tells us a lot about the class character of Free India, that they committed the worst atrocities and they oppressed those people and tried to take away the land that they had fought for. But actually they were not able to do it, only in a few cases. So although the movement had so many martyrs and so much suffering, but still the worst aspects of landlordism and feudal oppression came to an end in that area. And now I must speak a little bit about the heroic struggle in Kerala, which is known as the Punapra Vayalar struggle. एक ज़िला है अलपुरा, और अलपुरा में भी 40 के दशक के अंत में वहाँ के जो लोग हैं वो संगठित हुए। और वो कैसे संगठित हुए, वहाँ पर ये जो is this coir matting or is it plastic? ये आपको कॉयर है ना, तो ये जो अलपुरा है ये कॉयर का केंद्र है। यहाँ पर कॉयर के कारखाने हैं जिसमें हज़ारों औरतें भी काम करती थीं और उन्होंने यूनियन बनाई थी कॉयर मजदूरों ने 1940s में, और उस यूनियन ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने ये भी फैसला किया कि हमारे जो गरीब भाई बहन गाँव में रहते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, और ज़मींदारों के साथ साथ क्योंकि आज़ाद नहीं हुआ था देश,
और ये जो दक्षिण केरला का हिस्सा है, वहाँ पर एक राजा था, ट्रावनकोर का राजा, और उसका एक दीवान था सीपी रामस्वामी अय्यर, और उसने घोषणा कर दी कि आज़ादी के बाद हमारा राज्य तो अलग हो जाएगा, हम भारत के साथ अपने आप को नहीं जुड़ेंगे। तो वहाँ के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, ये दीवान और राजा के खिलाफ भी लड़ रहे थे, और गांव में जो बहुत ही क्रूर जमींदार थे उनके खिलाफ भी लड़ रहे थे। एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई, क्योंकि इस लड़ाई में मजदूरों ने निकल करके पूरी तरह से उन ग्रामीण गरीब लोगों का साथ दिया, और इतनी औरतों ने कुर्बानी दी कि शायद हमारे देश के स्वतंत्रता के इतिहास में शायद तेलंगाना को छोड़ करके इतनी महिला शहीद हमको और कहीं नहीं मिलेंगी, जितना कि इस छोटे से इलाका जो एक ज़िले का एक छोटा सा हिस्सा है उसमें हुआ। So in Kerala, the southern part of Kerala was still Raja's territory, Raja of Travancore, and he had a Diwan, C.P. Ramaswamy Iyer, who made an announcement that after independence, we will become independent, we will not join India. And that state had saw terrible feudal oppression of the landless people in the villages. It was also the area where there were very big coir factories, and the coir factories employed thousands of men and women who formed a union, very strong union. They fought for their own rights, but they also decided to fight under the red flag for the rights of the landless and the poor peasantry. And so a united struggle started, and the police fired upon them several times. जो पहली फायरिंग हुई उसी में ही महिलाएं मारी गईं, और उसके बाद जो मजदूर थे, जो किसान थे गरीब, उन्होंने भी फिर लाठियां ले लीं, झाड़ू ले लिए, बंदूकें भी ले लीं, और उन्होंने भी फिर ज़मींदारी के ख़िलाफ़ और जो ट्रावनकोर का राजा था उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने का काम शुरू कर दिया। और एक बार फिर यही हुआ कि आज़ादी आने के बाद जो आज़ाद भारत की सरकार थी उसने भी अपनी पुलिस और मिलिट्री को वहाँ भेज करके उस आंदोलन को बिल्कुल तहस नहस करने की कोशिश की, और कई लोगों को जेल भेजा, और वो 1950 तक जेलों में ही रहे। So in that big struggle where the workers joined the landless against the Raja, against the British and against their landlords, there were many incidents of police firing. Huge numbers of women participated in that struggle. Many women were killed in police firing, but those women also decided to fight. So they had lathis, they had brooms, they even had guns, and they fought against the oppressors, and they actually won some battles. But unfortunately, after our country became independent, independent India sent its police and military to crush that struggle. So once again, we are confronted with the limitations of the independence that we have achieved and the class character of that independence. तो एक बार फिर हमको देखने को मिलता है कि हमारी जो आज़ादी थी उसमें कमियां कितनी थीं, और उस आज़ादी का भी एक वर्ग चरित्र था, उसको भी हमें पहचानना पड़ता है। But in this struggle, I want to tell you of Alapura, Punapra Vayalar, many names come. Two great women emerged from these struggles, Gauri Amma and Sushila Gopalan. But it was a Dalit, poor Dalit girl called Medini who was the voice of this movement. She used to sing. From the age of 5, she started singing. बड़ी बड़े नेता इसमें से निकले, जैसे गौरी अम्मा जिनका नाम आपने कई बार सुना, सुशीला गोपालन, लेकिन इसकी जो आवाज़ थी इस आंदोलन की वो एक बहुत ही गरीब दलित लड़की मदनी की आवाज़ थी, जो गाती थी और अपने गानों से, अपनी कविताओं से लोगों को जगाती थी और उनको लड़ने के लिए तैयार करती थी। वो अभी कुछ ही दिन पहले मरी, और उसने मरने से पहले कहा कि पुनप्रा के आंदोलन के पहले हम लोग सूरज उगने से पहले उठ जाते थे और 6 बजे शाम तक काम करते थे। कोई टाइम नहीं था और कोई इसकी मजदूरी नहीं तय थी, और दिन का काम जब ख़त्म होता था तब घर के अंदर ज़मींदार लोग घुसते थे
और औरतों के साथ ज़बरदस्ती करते थे। इसकी वजह से हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया और पहली लड़ाई हमारी थी अपनी इज्जत को बचाने की। और फिर उन्होंने कहा कि आज जब हम नए केरला को देखते हैं तो उस ज़माने की बातें एक बहुत ही बुरे सपने की तरह हमको याद होती हैं। सो इट वाज मेदनी, दिस यंग गर्ल from a poor family, landless family, who used to sing songs and write poetry to mobilize and inspire the people to join the struggle. And she gave an interview a few years before she died in which she said that we used to get up before sunrise and work till after sunset. And after working, the landlords would enter our homes and force themselves on us. So when we started the fight, it was a fight for our honor. It was a fight for our respect, not so much about wages and other things. And then she said, now in the new Kerala, when we look back at that time, it feels like a bad dream, and we can't imagine that Kerala was like that. So now I'm actually coming to the end of my talk. I've taken quite a lot of your time. I think that I've tried to cover as many parts of the country, but it's not possible. It's a huge country, and there are innumerable names of women freedom fighters and warriors. लेकिन आज जो हम लोग यहाँ हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, तो इन महिलाओं के संघर्षों को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जैसे कि मैंने कहा, इन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी जाति भेदभाव के खिलाफ, महिला असमानता के खिलाफ और अपने देश की आज़ादी के लिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के ये लड़ी और इन्होंने आगे जाने वाले रास्ते से बहुत सारे बेड़े हटाए और अपने पैर में पड़ी बेड़ियों को भी तोड़ने का काम किया। मतलब उन्होंने हमको मौका दिया कि हम आगे बढ़ें। So these women who fought, they were fighting against caste oppression, against gender oppression, and against slavery. And when they fought, they removed many barriers, and they also broke the shackles on our feet, so that while they moved ahead, they actually opened the path for us to move ahead. So it's very important for us to see that the freedom that we've got, and 75 years later, are we living in the India of their dreams? आज हमारे लिए सोचना ज़रूरी है। उन्होंने हमारे लिए रास्ता खोला। हमें सोचना पड़ेगा कि जिस देश में आज हम रह रहे हैं, क्या वो देश उनके सपनों का देश है? और मानना पड़ेगा कि नहीं है। गरीबी, असमानता, जाति उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, सांप्रदायिक उत्पीड़न, भूख, ये सारी चीज़ें आज भी हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर से मौजूद हैं। So when we try to see, is this the India of the dreams of those brave freedom fighters, we have to say that no, it is not. It is still an India which is ridden with poverty, inequality, caste, gender, and communal oppression, and above all, it is still an India haunted by hunger. अब मैं ये कह सकती हूँ कि केरला एक अपवाद है, एक बढ़िया अपवाद है. I can say with pride that Kerala is an exception to this. It is an honorable exception to this. लेकिन बाकी जब हम अपने देश के चित्र को देखते हैं तो हमको बहुत कुछ सोचना चाहिए, हमको बहुत कुछ समझना चाहिए, और निश्चित रूप से जिस लड़ाई को हमारी माँओं ने और हमारी बहनों ने शुरू किया, उस लड़ाई को आगे ले जा कर के सच्ची आज़ादी की लड़ाई जो अभी बाकी है उसको लड़ने का फैसला हमें करना होगा. So, seeing the situation in our country where we seem to be going backwards instead of forwards, where so many of our rights and so many of our freedoms are actually being taken away, where there is so much attack on even the right of expression, where there is so much attack on gender freedom, where even today young women cannot marry
out of their own choice. They are being killed for marrying out of their own choice. We have to think about the situation, and I think that we have to all decide that the fight that our mothers and sisters fought so bravely and with so much sacrifice, that fight has not ended. It needs to be taken forward, and I hope that all of us, along with all the millions that we try to represent and try to meet, will all decide that that unfinished struggle has to be taken ahead. The story of India's freedom struggle has not ended. In fact, a new chapter has just begun. Thank you all very much. Thank you so much, ma'am, for your inspirational words. Next, may I invite Srimati Nandita Das ji, Honorable MLA from Assam, for sharing her thoughts on the theme, Role of Women in India's Freedom Struggle. Over to you, ma'am. Namaskar, good afternoon. Respected Srimati Subhashini Ali ji, she is former MP Lok Sabha. Sanmaniya Bihar के MLA Pratima Kumari ji, Sanmaniya Punjab के MLA Anmol Gagan Man ji, Sanmaniya MLA, Sanmaniya MP, former MP Respect P Sathe Devi ji, MLA Kerala C.K. आशा जी, सभी को नमस्कार। इधर जितने भी लोग हैं, डेलीगेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट से आए हैं, MLAs and other dignitaries, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। I feel very proud to be here in this valued conference organized by the KLA in connection with the आज़ादी का अमृत महोत्सव। कुछ ही समय पहले हमारे मैडम फॉर्मर MP सुभाषिनी जी ने जितने भी बातें हमें बताए हैं रिगार्डिंग रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सारे बातें उन्हें अपने स्पीच में बताए हैं। बहुत अच्छा लगा। हमें तो इतना मालूम ही नहीं था कि इतना सारा महिला जो ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट कोने में फ्रीडम स्ट्रगल में इतने काम किए हैं। और मैं KLA के स्पीकर राजेश जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया, नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस, और आज का जो सेशन है, इस सेशन के जरिए हमें बहुत सारे बातें आज सुनने को और कुछ बोलने को भी सुविधा दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। रिगार्डिंग फ्रीडम फाइटिंग में जो लड़ाई महिला ने लड़े थे, हमारे आसाम का भी बहुत सारे महिला है जिन्होंने भी अपने को बलिदान दिया है। लेकिन देखा जाता है कि बहुत समय उनके बारे में सुनना, उनके लिए उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करना, ये लगता है रह जाता है। जितना होना चाहिए था उतना होता नहीं है। इसीलिए आज जो सेशन है, ये सेशन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। कुछ मेरे आसाम के जो MLA है, जो हमारे आसाम के जो महिला है, जो लेडीज़ थे, जो आज़ादी के लड़ाई में काम किए थे, अपने को बलिदान दिए थे, उन लोगों के बारे में कुछ ही शब्द मैं आपके सामने रखूँगी। I am Nandita Das, an elected MLA of Indian National Congress from Bokok constituency of Assam Legislative Assembly. Many delegates will be speaking about the contribution of Indian women in freedom movement in elaborate manner. I am not feeling it necessary to repeat it again. In the context of Assam, which is said to be the gateway to Northeast India, it would be wrong if the contribution of the Assamese women is not recognized and acknowledged. Freedom fighter Kanaklata Borua died at the tender age of 17 trying to hoist the national flag at Gopur police station during the Quit India movement. Freedom fighter Bhogeshwari Fukononi was also shot dead at the same day and died 3 days later.
At that time, Manipur was an integral part of Assam province. A Naga leader, Rani Gaidilu, was given life imprisonment by British government at the age of 16 when she was in jail in Shillong. Nehruji visited her and conferred her the title of Rani. She was also given the Padma Bhushan award later. I come from the land of Mula Gabhoru, who was the first female martyr of Assam, an Ahom daughter who died fighting to save Assam from the invasion of the Sultan of Bengal. Reboti Lahon was the first Assamese woman to be sent to cellular jail in Andaman. Motiur Nessa, a daughter of freedom fighter Sahadev Munshi, gave birth to a child in jail. There are many more examples of women who bear the hardship of freedom struggling along with men but are yet to be recognized. When Gandhiji visited Assam, he was welcomed by an Assamese named Bar Raja with a nicely woven cloth of hand-spun thread. He complimented, Assam would rise to its full height in the matter of Swadeshi. Each woman can weave more than enough for themselves. The encouragement from Gandhi made a lot of women start weaving clothes. The promotion of spinning and weaving was one of the major constructive programs of the freedom struggle, and now this has become one of the largest industry in Assam with 95% women workers. Women in Assam joined the movement in large number. Many satyagrahi training centers for women were opened in different parts of Assam. The women of Assam understood Gandhiji's concept of do or die in their own way and participated in all types of activity. In most urban areas, the boys and girls continued to play in various underground activities, organizing themselves into death squad known as Mrityu Bahini. Kanaklata Borua was one of the frontline members of the Mrityu Bahini. The year 1942 was to be momentous year for the people of Assam. The Congress Working Committee adopted a resolution for Quit India movement. Accordingly, in Assam, also in various districts geared up for the movement. The Dorong District Congress Committee decided to hoist national flag on the police station and court buildings. Kanaklata Borua led the procession of men and women coming from nearby villages for hoisting the national flag at Gohapur police station. The police opened fire at the processionists at Gohapur and Dhekiajuli and killed Kanaklata Borua, Kahuli Devi and Kamuli Devi on the spot. After the call for Swadeshi movement by Gandhiji, women in large number threw away their foreign clothes and made bonfire of them. Women in Assam organized picketing in front of shops dealing with foreign clothes, liquor and opium. They also resorted to a number of underground activities which included disruption of communication by cutting telegraph and telephone lines, sometimes even destroying building and railway lines and burning government buildings. Needless to say that these freedom fighters who had chosen this revolutionary path had to face untold miseries. Often they worked for days together without a wink of sleep or a morsel of food, exposing their lives to great risk. They used to visit different places and carried secret messages and propagated the underground movement. Sudhalata Datta once covered a distance of 142 kilometers on foot with a child on her lap. This struggle of women headed by women organization was also the struggle for emancipation. Providing them a public space, it
give them a space to define a self-image in terms of an individual and separate identity rather than the traditional identity of being someone's daughter, wife, or mother. It is for this reason that the British Prime Minister declared in 1930 that who they are afraid of was not Gandhiji, but the innumerable women of India who became the mouthpiece of the message of the revolt in every household. No military force could suppress such an awakening. This is a short description of the freedom struggle of women in Assam, which is placed in this August Assembly for information to all concerned. Thank you very much, and my deep thanks to the organizing agency, especially our speaker sir, for giving me and the other speakers the opportunity to speak my speech in this valued platform. Once again, thanks to all. मैं यहीं पे हमारा स्पीच ख़त्म करना चाहती हूँ, एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बाद में बहुत सारे स्पीकर हैं. सो थैंक्स टू एवरीवन. थैंक यू KLA. Thank you so much, ma'am, for putting light on the role of Assamese women in the freedom struggle of India. Next, may I invite Srimati Pratima Kumari ji, Honorable MLA from Bihar, for sharing her thoughts on the topic. नमस्कार. आज वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे मंच पे सम्मानित पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय सुभाषिनी अली जी, इस मंच पर उपस्थित पंजाब की हमारी सम्मानित विधायक अनमोल गगन मान जी, आसाम की हमारी सम्मानित विधायक माननीय नंदिता दास जी, महिला आयोग की मेंबर माननीय CK आशा जी, और सीता देवी जी, और माननीय विधायक मंच पे उपस्थित श्रीमती CK आशा जी, और ऑडियंस में बैठे हमारे सभी देश के विभिन्न कोनों से आए हमारे सम्मानित बहना जनप्रतिनिधिगण और हमारे भाई, और यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, आदरणीय इस विधानसभा के स्पीकर माननीय BK राजेश जी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ. सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करती हूँ कि जिसकी बदौलत, जिनके प्रयासों से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे आप सबके सामने इस बड़े से कार्यक्रमों में, जहाँ देश के विभिन्न राज्यों से आई हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला. आज़ादी में महिलाओं की भूमिका पर हमारे जितने भी सीनियर नेता थे, नंदिता जी, और हमसे जिनको देख करके, जिनको सुन करके मैं बड़ी हुई हूँ, आदरणीय सुहासिनी मैडम जी को, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि महिलाओं को आज़ादी में उनकी क्या भूमिका रही है, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ़ है. कुछ नाम तो पन्नों में होता है कि हम उनको पढ़ के और हम बताते हैं कि ये महिलाएं जो थीं, कुछ 400-500 महिलाओं का नाम हम गिना देते हैं और ये बताते हैं कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई थी. लेकिन वो तमाम महिलाएं जो घर पे रह कर के अपने पुरुषों को, अपने परिवार के लोगों को, जो सेना में भर्ती होकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, देश को स्वतंत्रता कराने के लिए सीमा पे अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे देश के अंदर, उन महिलाओं को हम भूल जाते हैं. मैं ज़्यादा विशेष लंबा चौड़ा भाषण देने में विश्वास नहीं करती हूँ. मैं बिहार के वैशाली लोकतंत्र की धरती से हूँ, जहाँ महावीर का जन्म हुआ है. मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद आज देश की स्थिति ये है कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें मात्र 1 महिला मुख्यमंत्री है. हमारे देश में मात्र 2 स्पीकर हैं. तो ये बहुत ही दुख की बात है कि आज़ादी में हमने अपनी जो महिलाओं का संपूर्ण योगदान रहा, सराहनीय भूमिका रही उनकी, रानी लक्ष्मीबाई हों,
चाहे वो जितनी भी अभी मैडम ने बताया, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, चाहे वो राजघराने की हों, चाहे वो दलित समाज की हों, चाहे वो तवायफ वर्ग की हों, जिनको समाज के लोग बहुत ही गिरी हुई नज़रों से उनको देखते हैं, लेकिन वो जब आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी तो वो लोग अपनी संपूर्ण योगदान लड़ाई में दिया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से केरला के माननीय स्पीकर साहब ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दें, ताकि हम अपने अधिकारों को लेकर के देश के विकास में संपूर्ण योगदान दे सकें। क्योंकि देश आज़ाद नहीं होता यदि बापू के साथ बा नहीं होती, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उनकी धर्मपत्नी नहीं होती। ऐसे तमाम लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जैसे तमाम नाम हैं जिनको हम भूल जाते हैं और हम याद नहीं करते, क्योंकि अब हम आज़ादी के 75 साल बाद आने के बाद आज भी हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहा है। मैं जिस राज्य से आती हूँ वहाँ तो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, पुलिस की नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा की बात आती है तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश और पुरुष विचारधारा आगे आ जाती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि महिलाओं का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें अपने घर से ही उसकी शुरुआत करनी होगी। अपने बेटे को यह समझाना होगा कि ये तुम्हारी बहन है और तुम इसके भाई हो। महिला जब अब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको चलने से लेकर के उसको बोलना तक सिखाती है। तो जब महिला आपको चलना और बोलना सिखाती है तो देश भी चला सकती है। और इसका साक्षात उदाहरण हमारी देश की सम्मानित प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं, देश की सम्मानित स्पीकर मीरा कुमार जी, और साथ ही हमारी देश की सम्मानित राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। तो महिलाओं को ये बताने की और देश को ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि महिला क्या कर सकती है। महिला को यदि आप कोई भी काम देते हैं तो वो ईमानदारी निष्ठा के साथ वो काम करती हैं। मैं तो बस बहुत ज़्यादा मैं भाषण देने में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि महिला गूगल है। आपको यदि कोई चीज़ की जानकारी ना हो और आप जैसे घर में आप होते हैं, आप बोलते हैं कि शर्ट कहाँ है, पैंट कहाँ है, बच्चे का टिफ़िन कहाँ है, वो फटाक से आपको खोज के देती है। आपके पास यदि घर में पुरुषों के पास पैसा ना हो तो अपने बचत करके वो रखती हैं, वो देती हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि हमारी आज़ादी में हमने, अपने देश की आज़ादी में हमने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है और इसका वर्णन हमारे सम्मानित नेताओं ने किया है। बस हम यही चाहते हैं इस पुरुष प्रधान देश में कि आप लोग जात पात धर्म से ऊपर उठ करके हमारी हर बहनों को, महिलाओं को विधानसभा में और देश के लोकसभा राज्यसभा में हमें हमारा अधिकार दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कैंडिड वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Next, I would like to invite Srimati Anmol Gagan Manji, who is an honorable MLA from the Punjab Legislative Assembly, to share her thoughts. सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं पंजाब की धरती से हूँ, भगत सिंह की धरती से, शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और आज मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल स्पीकर जी रमेश जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी महिलाओं को, एमएलएस को, रिस्पेक्टेड एमपीज़ को, मिनिस्टर्स को इकट्ठा किया है। डिफरेंट स्टेट से हम मिले हैं, एक दूसरे को जाना है, कल्चर को जाना है, राजनीति को जाना। और बहुत बड़ा टॉपिक है कि आज़ादी में देश को, स्वतंत्रता संग्राम में औरतों का क्या योगदान रहा है, क्या किया है औरतों ने। कितने नाम आते हैं, दो जैसे बहुत ही हमारे जो मैडम एमपी बोले हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उनका योगदान बहुत बड़ा था। उनकी जिंदगी, जिस तरीके से उन्होंने
7 साल की उम्र थी उनकी जब उनकी शादी हो गई थी महाराजा के साथ, झांसी के। 4 महीने में उनके बेटे का, कहाँ से इतनी बड़ी फाइट कैसे स्टार्ट हुई, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कैसे लड़ी वो, उनके बेटे की 4 महीने के बाद, जन्म के बाद देहांत हो गया। तो अगर राजा का अपना पुत्र नहीं है तो ब्रिटिश थे उनकी, वो पूरे का पूरा राज्य खुद ले लेते थे। उसके बाद ये 1958 की बात है कि ब्रिटिश फोर्सेस ने, जब वो झांसी पे उसके किले पे कब्जा करने आए, महाराजा की डेथ होगी, बेटा था नहीं, और जो अडॉप्ट किया था उसको वो मानने को मंजूर नहीं थे। तो अगर नेचुरल अपना बेटा नहीं है तो अंग्रेज क्या करते थे, उस पूरे के पूरे साम्राज्य को अपने में ले लेते थे। तो लक्ष्मी भाई ने मना कर दिया कि मैं झुकूंगी नहीं। कितनी उम्र थी उनकी उस लड़की की, झांसी की रानी की कितनी उम्र थी जब वो शहीद हुई लड़ते लड़ते ब्रिटिश आर्मी के साथ, 23 साल की। ये है औरत की बहादुरी, ये है झांसी की रानी जिसने सबसे पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसको गोरे भी मानते थे कि इससे बड़ी फ्रीडम फाइटर इंडिया में नहीं है। ये हमारी औरतों की प्राप्ति है। अब मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब की बात करती हूँ। हमारे गुलाब कौर है पंजाब में, संगरूर से गुलाब कौर, इन्होंने अपनी, ये गदर लहर थी उस टाइम, उससे बहुत प्रभावित थे। इन्होंने अपनी, इनके हस्बैंड यूएसए में सेटल होना चाहते थे, इन्होंने रिफ्यूज़ किया, उसको मना किया कि मैं देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ूंगी। अपनी पूरी मैरिड लाइफ का सेक्रीफाइस किया। तो जब ये पूरी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कि जहाँ से जाओ हमारा देश छोड़ो, पूरी का पूरा जंग लगी हुई थी, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की कैद हुई। इनको टॉर्चर किया गया गुलाब कौर को, और 1931 में इनका देहांत हो गया। हमारी औरतों ने नो डाउट, भगत सिंह था तो भगत सिंह की जो बहन थी उन्होंने बोला था जेल में जाकर कि डोलना नहीं है, आज़ादी के लिए मुझे प्राउड है कि तुम मेरे भाई, और आज़ादी के लिए लड़ना है। जैसे सभी हमारे मानयोग स्पीकर्स ने बोला कि औरतों ने बैक से भी सपोर्ट की है, लेकिन मैं उन औरतों के बारे में बता रही हूँ जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने आखिरी सांस तक वंदे मातरम बोला गोली खाकर। अगर इंसान पैदा होता है तो औरत के पेट से पैदा होता है। औरत कभी कमजोर नहीं हो सकती। अभी ये भी मुद्दा है कि औरतों को सियासत में आगे आना चाहिए। चलो हम लोग सभी जो पावरफुल लेडीज बैठी हैं, आप लोग वो हैं जो अपने क्षेत्र में एग्जाम्पल हो, आप इंस्पिरेशन हो और लेडीज के लिए। लेकिन बहुत सारी, मैं दावा करके बोल सकती हूँ सर, कि जब एक औरत एमएलए बनती है, एमपी बनती है, मिनिस्टर बनती है, तो ज्यादातर काम उसका पति देखता है, भाई देखता है, बेटा देखता है। हम क्यों नहीं देखते खुद? कब हम आगे आएंगे? कब हम खुद संभालेंगे? जब तक हम आगे आकर खुद पावर में आकर, पति ठीक है सभी को लेकर चलो साथ में। कभी सुना है कि लड़का एमएलए बन गया तो उसकी बीवी भी बन गई साथ में? लेकिन अगर लड़की बन गई तो लड़का डेफिनेटली उसका पति आगे हर चीज में। सो हमें ये चीज भी करनी पड़ेगी कि खुद संभालो, अपना क्षेत्र संभालो, अपना जितना आपको मिला है। ये चीज बहुत जरूरी है। हम में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि शुरू से दबाया गया। इन लड़कियों ने, जैसे उदा देवी थी, ये एक दलित फ्रीडम फाइटर थी। इस लड़की ने पेड़ पे चढ़ के, स्नाइपर थी, 32 आर्मी जो ब्रिटिश सोल्जर थे 32 को मारा गोलियों से। जब उसकी आर्मी ने देखा कि लड़की मार रही है, उनको लगा शायद कोई लड़का है, पता नहीं चला, तो ऊपर से उसको शूट किया और नीचे गिराया। इसकी मतलब कि उदा देवी 1857 की है, जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी।
इसको शहीद कर दिया गया। क्या इसमें हमें लगता है कि जब ये उन टाइम की बात है जब औरतों को बाहर खुल के आने की आज़ादी नहीं थी, तो हम आज की औरतों में क्या कमी है? हमें तो आज़ादी पहले से ज़्यादा मिल रही है। हमें अपने माँ बाप, दो बच्चे होते हैं आजकल, एक लड़का एक लड़की, 2 लड़कियां 1 लड़का, ज़्यादा का नहीं है, तो हमें पढ़ाई के भी मौके मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें संभलना पड़ेगा। जितने ये आप ताकतवर महिलाएं बैठी हो, सक्सेसफुल महिलाएं बैठी हो, मैं दावे से बोल सकती हूँ कि बहुत सी ऐसी हैं जिनके भाई, जिनके घर वाले, वो भी आधी से ज़्यादा आपकी विधानसभा संभाल रहे होंगे, आधे तो एमएलए उनको मानते हैं। मेरी विनती है एक एक इस देश की एमएलए से, मिनिस्टर से, एमपी से कि अगर आपको मौका मिल गया है पावर में आने का, कानून बनाने का, तो खुद संभालो, कमांडर बनो, आगे लगो, लीडर बनो। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनका औरतों का नाम नहीं आता कि इन्होंने भी लड़ी है आज़ादी के लिए। जैसे हमारे एमपी मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया, हमारे बिहार से एमएलए मैडम हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो बोल के गए हैं। इसके अलावा मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बीकाईजी कामा, अरुण आसफ अली, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोला गया। अभी मैं मणिपुर की एक लेडी की बात करती हूँ, रानी गेडनिल्यू, रानी ऑफ नागाज बोला गया। कितनी उम्र थी जब ये लड़ने लगी अंग्रेजों के खिलाफ, गुरीला वॉर बना के? कितनी उम्र होगी? एक बच्चा था 13-14 साल की उम्र की। हम उनसे काफी मैच्योर हो चुके हैं। ये झांसी की रानी ने 23 साल में शहीदी दी थी। ये लड़की रानी ऑफ नागाज 13-14 साल की उम्र थी। 16 साल की उम्र में इसको कैद होगी 1932 में, और 14 साल जेल काटी इसने, और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये रिहाई हुई इनकी। 14 साल जेल काटी देश की खातर लड़के, गुरीला वार करके। कौन कहता है कि औरतों ने सिर्फ खाना पकाया है? औरतों ने गोलियां भी खाई हैं। एक नाम है मातगिनी हाजरा, 1942 का। इनकी 72 साल उम्र थी। पुलिस स्टेशन के सामने जाके इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया, और इनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई सीधा। 72 साल की महिला के ऊपर जब गोली लग गई तो उसने अपने आखिरी सांस जब बंद नहीं हुई, उसने एक ही बोलती रही, वो जो बयान दर्ज है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये बोल के वो शहीद हुई। ये एक बहादुर, हम सब में बहादुर औरत है, हम सब में लीडर है, हम सब में वो काबिलियत है कि हम सब संभाल सकती हैं। और आप लोगों को मौका मिला है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हम लीडर बने। अगर मौका मिला है हमें संभालने का, तो खुद संभाल के दिखाएं, ताकि और भी औरतें वो मोटिवेशन लेके आगे आए इस राजनीति में। और बहुत से नाम ऐसे, जैसे कनकलता वर्मा थी, उनकी 17 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। मैं इस समाज को, हमारे देश में पहले से औरतों का जो सुधार है, उनके जो राइट्स का पहले से सुधार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम बोलें कि आज होम, जो हाउस में घरेलू वायलेंस नहीं होती, गलत है, होती है। औरतों पे हाथ उठाया जाता है। सिर्फ औरतों पे भरोसा करो, उनको भागने के लिए, दौड़ने के लिए जमीन दो, उनको उड़ने के लिए खुला आसमान दो, तो क्या होता है? वो ऐसे बैठती हैं, फिर वो एमएलएज बनती हैं, वो एमपी बनती हैं, वो मुख्यमंत्री भी बनती हैं। उनको खुला आसमान देना पड़ेगा, उनको मौका दो, उन पे भरोसा करो। औरतें बहुत ईमानदार और अच्छे दिल वाली होती है। पॉलिटिक्स में आएंगी, अगर घर संभाल सकती हैं तो देश भी संभाल सकती हैं। जी, आखिरी बात, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मुझे पता है बैक पेन और हेडेक, सुबह से बैठे हो, ऐसे लग रहा है कब बंद हो गए सभी और हम जाएंगे इधर से। मुझे पता है, पहले मैं सामने ही बैठी थी। देखिए,
महिलाओं की मैडम बात है जी। आज जो अब्रॉड हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनकी जो वर्क फोर्स है, उनकी पॉलिटिक्स है, वहाँ पे वुमेन इक्वल पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो उसको काम, अगर घर का जेंट्स काम कर रहा है तो फीमेल भी, महिला भी काम पे बरोबर जा रही है। वुमेन को राइट है वहाँ, आपको सभी को पता होगा, आप एजुकेटेड लोग हो, कि वहाँ पे वुमेन को राइट्स हैं। जिस दिन हमारा तो काम ही मैन पावर का है ना, आबादी बहुत अच्छी है हमारी, तो जिस दिन हमारे देश में महिलाओं की इक्वल पार्टिसिपेशन हो गई पॉलिटिक्स में, सामाजिक कार्य में, वर्क फोर्स में, उस दिन इस देश को वर्ल्ड पावर बन से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन ये देश बन जाएगा जिस दिन महिलाएं साथ में आकर खड़ी हो गई, जिस दिन इनको उड़ने के लिए आसमान मिल गया और दौड़ने के लिए ज़मीन मिल गई। सो आप सभी प्यारी महिलाओं को, कामयाब महिलाओं को आपके बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे केरला विधानसभा ने मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा काम किया आपने। हम इतनी महिलाएं इकट्ठी करनी आसान काम नहीं है, लेकिन आपने सभी को चुप करके बिठाया हुआ इधर और सभी सुन रहे हैं। और केरला के बारे में बोलूँगी, इतने सिंपल लोग, इतना साफ सुथरा माहौल है, इतने डाउन टू अर्थ, खाने में सिंपलिसिटी, पहरावे में, बोलने में, और सबसे ग्रीन लैंड है जो मैं देख रही हूँ, क्लीन एनवायरनमेंट है। बहुत अच्छा लगा, आपने बुलाया, धन्यवाद यहाँ पे आने का, हमें अवसर दिया। केरला वाले जितने भी मिल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं। और मेरी बहनों को, मेरे बड़े छोटे जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं अभी 2 महीने हुए हैं, मैं एमएलए बनी हूँ आम आदमी पार्टी से, पंजाब से, तो कोशिश कर रही हूँ अच्छा करूँ देश के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए, यूथ के लिए अच्छा काम करूं। और आप सभी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप बड़े हो मेरे से, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो कुछ ज़्यादा बोल गई हूं तो सभी ने माफ़ कर देना है, छोटी समझ के। बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मान जी, फॉर दिल से बात की आपने, दिल को छू लिया सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। Next, I would like to invite Srimati P. Sati Devi Madam, moderator of the session, for the concluding remarks. Thank you, every speakers. They have already, in the time limit, in the prescribed time limit, they have put forward several good ideas. And Comrade Subhashini Ali, while addressing the audience in her keynote address, she has started her speech pointing out the struggle of ordinary women with extraordinary courage in the freedom struggle. She has pointed out the role played by women in all parts of the country. She has mentioned all the nooks and corners of the country, how ordinary women come forward in the freedom struggle. And she has, in her speech, she has pointed out how after 1942 the entire struggle, the nature of the struggle was changed, and in order to obtain freedom from the British rule, the men and women, both men and women participated in the struggle, and the struggle has against the zamindari system, against the rajas, and against the exploitation that was going on in the country. So she has very categorically stated the role played by the entire women folk of the country, even though the role played by the ordinary women, ordinary poor women, was not very pinpointedly written in the history. So better analysis of this freedom struggle, the role played by women, is highly necessary even at this time of 75th anniversary of our freedom. Now our MLAs, our sitting MLAs from Assam, Bihar and Punjab, we are very proud to hear the words and how these sitting MLAs, they are making their role, how they are interfering in their legislative assembly to bring women's security and to secure
the equality in lawmaking, and how they are interfering. Our member Namita Das from Assam, she has pointed out the role played by Assamese women in the freedom struggle, and our MLA, even though I have not fully understand, but her beautiful Hindi I have followed. This session always converted to a Hindi session, even though we from Kerala, we are following it, but we are not able to understand the real sense of how you are interfering, and the role played by women all over the country, in Assam, Bengal, Bihar, and the Punjab. They have pointed out it very well. So the dream of our former leaders, the dream of ordinary women who has lost their life in the freedom struggle, their dream has not yet fulfilled. That is the real words that have put forward here. So we should continue our struggle to bring equality, to attain the equality that is put forward in our constitution. We should continue our struggle to obtain the real freedom, that is the freedom from all sorts of oppression, all kinds of exploitation, and all sorts of discrimination on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of creed, and on the basis of sex. So in the male-dominated society, the role of our women legislators are much more increasing to attain the equality as prescribed in the constitution. We should fight forward, and for that future struggle, the memory of our freedom fighters, the memory of our poor women who have sacrificed their life with the dream, a wonderful dream of the society, equality society, which bring equality in rights, so that we will have to fight again. And this session gives us more strength in fighting forward for to get all sorts of rights that is allowed in our constitution. And with these words I conclude. I thank you all. Thank you so much, ma'am, for your concluding remarks. May I now call upon Srimati C.K. Asha Madam, Honorable MLA of Kerala Legislative Assembly, to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, everyone who is gathered here, a warm good evening to all. This section was more informative as it was intriguing. We all were able to reminiscence about the brave woman who sustained freedom struggle, and we can proudly say that women of India are made of passion and courage, capable of scaling heights. While talking about our great freedom fighters, respected Subhashini Ali Madam mentioned about Comrade Medri Chechi. I am very happy to inform you, Madam, that she is alive and active, participating in social activities even at the age of 96. On behalf of the Legislative Assembly of Kerala and on my personal behalf, it's okay, madam. On behalf of the Legislative Assembly of Kerala and on my personal behalf, I thank Srimati Subhashini Ali Madam, former MP Lok Sabha, Srimati Nandita Das, Member Assam Legislative Assembly, Srimati Pradima Kumari, Member Bihar Legislative Assembly, Srimati Anmol
Gaganman, Punjab Legislative Assembly, P. Sati Devi, Chairperson, Kerala Women's Commission, for the inspiring words. Thank you all for participating in this prestigious seminar. Thank you.